Hello everyone. Let's start with Darwinism, the original theory of evolution by natural selection. So before Charles Darwin, many believed that species were fixed and unchanging. However, Darwin observed a world full of astonishing diversity when he found strange birds in Galapagos Island, giant fossils embedded in South American rocks, and subtle differences among similar creatures. And by his observation, he developed revolutionary ideas that species change over time through a process called natural selection. And he published his ideas in his book, The Origin of Species, in 1859. So these ideas, today they are known as Darwinism, and they provide the first platform for explanation of biological evolution. Now, as the foundations of Darwinism, he built his theory upon several observations and inferences. So first observation is that variations exist within population. So Darwin noticed that no two individuals in a population are exactly alike. So differences, subtle differences, minor differences occur. A slightly longer beak, a slightly darker feather, but such variations are real, and they are crucial because without differences, there would be no material for selection to act upon. And today we know these variations arise from genetic differences. Now, some of you who may not be aware of the idea of natural selection and how it acts on individuals and species. So, natural selection is like a way of selection done by nature, a kind of imaginary selection. So, in this way, nature it tries to select those who are reproductively suitable. It means those individuals who are fit enough to pass on their genes to next generation. So here nature can select only if there are variations. अगर variations ही नहीं है, then how is nature supposed to select those individuals who are reproductively advantageous? So that's the first observation that is made by Charles Darwin, that variations are there even if they are subtle, even if they are minor, but still variations there. और ये हम आज के टाइम में भी देख सकते हैं कि आप आसपास जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म देखते हैं, दे all of members of any species, they possess such variations among them. And these are the variations that will be acted on by nature, and they will be then either selected or eliminated based on the environment. Today we know these variations are from genetic differences. लेकिन डार्विन को ये चीज़ नहीं पता थी. So Darwin simply considered these variations as fact of nature. Now his second observation is that of struggle for existence. So resources such as food, shelter, and mates are limited. ये हम सब जानते हैं कि the resources in the world, the space in this world on this earth, it is limited. But the individual that exist on this earth, they are manifold greater than the resources. So this will create an environment of competition, a competition for survival and reproduction. And ऐसा भी कह सकते हैं because Darwin was deeply influenced by the ideas of Thomas Malthus. और आप लोगों को नहीं पता हो तो Thomas Malthus was a person who brought this struggle for existence thing. According to him, that organisms they grow exponentially. Exponentially means 2, 4, 8, 16, 32. But resources they grow arithmetically, which means in a simple series 2, 4, 6, 8, and 10. And now you can see the difference. 5 generation में the organisms they will increase up to 34. 2 से 32 यानी they increase by 16 multiplication. Whereas अगर यही resources की बात करें तो वो 5 generation में 2 to 10, which means 5-fold, 5 multiplication. So यहाँ पे ये mismatch है that
organisms, the members, they have grown by 16-fold, whereas resources they have not matched up with the growth of organisms. So this mismatch, this 11-fold gap, it creates sufficient grounds for competition, and then ensues struggle for survival and reproduction. So Darwin, who was influenced by Malthus, he brought his ideas into his work, and by arguing that human population would outgrow their resources, which means population would exceed the resource capacity, but these resources they are kept in check, which means they are controlled by famine, disease, or war. So Darwin realized this struggle for existence it's applied to all living organisms. Now, his first inference means his result, his deduction, which is differential survival and production. So, according to him, some individuals possess traits that give them an advantage in struggle for survival, and these individuals are more likely to survive and reproduce. And by reproduction, they pass on their advantageous trait to their offspring. This process is called natural selection, which leads over time to accumulation of beneficial traits within a population. Now, as of explanation, so इन दोनों observation से आपने देखा first variations are there, which means some traits, some individual will hold certain advantageous traits, advantageous characteristics, even if those are subtle, and then they would be struggle. So struggle अगर होगा, struggle for resources and mates, अगर struggle होगा, then there will be selection, क्योंकि struggle में सब के सब एक साथ तो पास होंगे नहीं, कुछ जो है एलिमिनेट हो जाएंगे एंड सम विल क्रॉस ओवर. सो ये इस सिलेक्शन में हु आर गोइंग टू क्रॉस ओवर. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, those with advantageous characteristic, advantageous traits will pass on, will cross over, will be selected by nature, and these individuals जो क्रॉस ओवर हो जाएंगे, जो सर्वाइव करेंगे, then वो सर्वाइव करेंगे तो then they will reproduce, and reproduce करेंगे तो उनके जो advantageous traits हैं वो उनके offspring में जाएंगे. So this whole scenario it is known as differential survival and reproduction. Differential survival means survival सबको survival के जो chances हैं it has not been provided equally to everyone. और reproduction का भी same है कि everyone is not equally capable of reproducing and passing on their genes, and the whole process is natural selection. Now his second inference, gradual change over time. So one of scenario, कोई pool of population है, like इतने individuals हैं, but resources जो हैं, ये मैं एक hypothetical situation बता रहा हूँ, and जो real world situation it is quite dynamic and complex, but explanation के लिए एक hypothetical situation, 10 individuals in a pool of population, but resources they are only there for 5 people, 5 person to survive. तो यानी इनमें से 5 जो हैं वो एलिमिनेट होंगे. अब देयर अ स्ट्रगल विल एंस्यू, और उस स्ट्रगल में इट्स नॉट लाइक इंटरपर्सनल राइवलरी, इट इज नॉट कन्फ्लिक्चुअल. वो हो सकता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, उनके बीच में वॉर हो सकता है, दे कैन किल ईच अदर, बट इन द एब्सेंस ऑफ दैट सिचुएशन, इन एब्सेंस ऑफ दैट थिंग, क्योंकि इस पूल के अंदर जो 10 इंडिविजुअल्स हैं या 10 मेंबर्स हैं, दे डू नॉट बिलोंग टू अ सिंगल स्पीशीज, अ सिंगल स्टॉक. अलग अलग हो सकते हैं. ये एक डॉग हो सकता है, एक मे बी एक कैटल, ये एक ह्यूमन स्पीशीज है, ये एक फ्लोरल स्पीशीज हो गया, कोई ट्री हो गया, देन ये एक एक्वाटिक स्पीशीज हो गया, ये एक रेप्टिलियन हो गया, ये एवियन हो गया. ये डिफरेंट स्पीशीज हैं. अब इनमें आप समझ रहे हैं कि राइवलरी का, इंटरपर्सनल राइवलरी जो है या मॉक फाइट्स की है, उनकी बात तो कर ही नहीं सकते. तो द स्ट्रगल इट विल बी रेगुलेटेड एंड विल बी वॉच्ड ओवर बाय नेचर. फिर नेचर में इस स्ट्रगल में जो 5 जो सर्वाइव करेंगे, वो जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है, इट विल बी
regarding रिसोर्स एक्विजिशन। और ये धीरे धीरे जब आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आपको पता चल जाएगा कि व्हेन एनी मेंबर ऑफ स्पीशीज दे गेट एंड होल्ड ओवर रिसोर्सेज, रिसोर्स अगर हैं देन दे विल हैव एक्सेस टू मेट्स, बिकॉज दैट्स द होल स्टोरी। रिप्रोडक्शन जो इवोल्यूशन है इट वर्क्स ऑन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नहीं है तो इवोल्यूशन सेंसलेस हो जाएगा। और जो मीट एक्विजिशन है विच मीन्स एक्सेस टू मेट्स और एक्सेस टू रिप्रोडक्शन, इट डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज। तो इनमें से जो भी रिसोर्स अक्वायर करेगा उसके पास मेट्स होंगे, और मेट्स होंगे रिप्रोड्यूस करेगा तो फ्यूचर ऑफस्प्रिंग में जीन्स जो है उनका पैसेज नेचुरली हो जाएगा। फिर जो सेकंड इन्फेरेंस है इट इज़ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में दिस टर्म इज नोन एज स्पेशिएशन। सो ये अगेन सेम थिंग, इस पूल ऑफ पॉपुलेशन है, ये 10 मेंबर्स हैं, screened out 5 members and now we have pool of 5 people. So 5 नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एलिमिनेट हो गए। अब इन 5 में से जो जो एलिमिनेट हो गए उनका जो जीन पूल है इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम। ये पूरे ही सिस्टम से वो जीन पूल जा चुका है ना। जो जो इवोल्यूशनरी सिस्टम में जो जीन है, जो जीनोम है, वो इन 5 लोगों का है। ग्रेजुअली विद टाइम ये 5 जो है ये फिर रिप्रोड्यूस करके अगेन 10 मेंबर्स हो गए इनके। देन फिर वही स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, इनमें से भी 5। सो अब इनमें से भी जो वेरिएशंस हैं वो आते गए। फिर अगेन नेचुरल सिलेक्शन, फिर स्क्रीन आउट हो गया। धीरे धीरे जो जीन पूल जो है it it changes in a profound manner. So this gradual and continuous change, it leads to formation of a new species by accumulation of genes over vast periods. So it is this accumulation of genes, these accumulation of small changes here and there, in सब screening out natural selection में, then mutation, फिर natural selection, then bringing in new gene, ऐसे करके स्मॉल चेंजेस जो है वो पॉपुलेशन में वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं। एंड इसी की वजह से द डाइवर्सिटी ऑफ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इट कम्स इनटू पिक्चर। नाउ द कोर कांसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, फर्स्ट, वेरिएशन इज यूनिवर्सल। सो एवरी पॉपुलेशन इट कंटेन्स इंडिविजुअल दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर, even if those differences are subtle, those differences are minor, but variations are there. And these differences, these characteristics, these traits, they affect an organism's chance of survival and reproduction. And I highlight this fact again, that evolution, it is about these two things: survival plus reproduction. Even if a species survive, even if a member of a species survive, but it does not reproduce, then it will not be counted under evolution. So evolution is a two-phase thing. First, an individual needs to survive. उसके लिए कुछ जो differences हैं, जो variations हैं, they need to be advantageous. Then the environment will act on it. फिर survival के बाद that organism reproduce से वो फिर अपने जो changes हैं they are passed on to future offspring. So this is how evolution works. और ये जो changes हैं यहाँ पे certain changes, फिर subtle changes in every upcoming generation, इस तरह से minor changes जो हैं they keep accumulating in the population. Now example cited that among giraffes some might have slightly longer necks allowing them to reach higher leaves. और यहाँ पे मैं आपको जो लमार्कियन आइडिया है उससे डार्विनिज्म का एक डिफरेंस बता सकता हूँ। सो John Baptiste Lamarck, he believed that giraffe जो है they had longer necks because of the physical effort while reaching for higher leaves. So Lamarck का आइडिया पूरी तरह से एक फिजिकल एफर्ट का था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है हर एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी giraffe individuals थे, all of them they stretch their necks. So
बिकॉज ऑफ द फिजिकल एफर्ट जो मसल्स हैं नेक की, दे ग्रेजुअली गेटिंग इलोंगेटेड। फिर यही जो इलोंगेटेड नेक्स हैं, ये जो इलोंगेटेड कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे वर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि और वो जो लमार्क का आइडिया था, ये उस वक्त का आइडिया था जब साइंस को लेके लोगों में कोई किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी। देन हम बात करते हैं डार्विनिज्म या डार्विनियन आइडियाज़ की। तो उस टाइम तक आते आते जो रॉयल सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल ग्रुप्स जो हैं वो भी बनने लग गए। मैनी आइडियाज़ वर रेडीली एक्सेप्टेड एंड एम्पिरिकली टेस्टेड। सो एक तरह से एक मूड तैयार हो गया था उस वक्त डार्विनिज्म के टाइम तक, तभी उसके आइडियाज़ जो हैं दे केम टू बी एक्सेप्टेड। वरना अगर मिडीवल टाइम में, जब व्हेन किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वर रूलिंग, उस टाइम पे डार्विनिज्म अगर वेरिएशन की बात करता तो ही माइट हैव बीन हैंग्ड। बट नाउ यहाँ पे we were talking about the difference between the Lamarckian idea versus the Darwinian idea regarding the elongation of neck of giraffes. So Lamarckian ideas की बात करते हैं, कर ली हमने कि physical effort की वजह से elongate हुआ, then this these acquired characteristics were passed on to next generation. यही डार्विनियन आइडिया की बात करते हैं। सो एक्चुअल में हुआ क्या था कि लेट्स से एक पर्टिकुलर जगह पर these 5 giraffe individuals are there from G1 to G5. अब उनमें कुछ कुछ वेरिएशंस तो थे ही, मतलब माइनर वेरिएशन थे, बट इनमें से हो सकता है जैसे ये वाला देखिए, इसकी नेक जो है वो इट इज स्लाइटली लॉन्गर। फिर ये जो सेकंड पर्सन है ये भी एवरेज से लॉन्गर है। फिर धीरे धीरे जब ड्रॉट्स एंड रिसोर्स स्कैरसिटी की वजह से जब जो ट्री लीव्स हैं वो कम होती गई, जो नीचे नीचे जो ट्री ट्रंक पे या जो नीचे की ब्रांचेस पे जो होती है लीव्स, वो तो जो एवरेज हाइट वगैरह है जिनकी भी है, दे वर ईटन बाय देम। अब जो लीव्स जो है वो ऊंचाई पे है। Now you are going to see how natural selection works in real term. अब जो upper leaves हैं they will be eaten by those with elongated neck or slightly elongated neck. तो यहाँ पे G2 and G3 they are going to survive. They are going to survive this drought situation by reaching for the higher leaves. तो अब ये है कि G1, G4 and G5 they will be eliminated, क्योंकि they are not able to access the resources, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, they will die out. अब बचे G2 and G3. Now this is the situation by which natural selection filters out the advantageous traits. So G2 and G3 they will survive, और ये survive करते ही then they will have access to reproduction, access to mates, और फिर ये जो अपने जो advantageous traits हैं ये they will pass on to their offspring. फिर उनके जीन पोल में, उनके जीनोम में अगर लॉन्ग नेक का जीन है देन इट विल बी एक्सेसिबल इन, इट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर ऑफस्प्रिंग। तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो सब लॉन्ग नेक वाले ही होंगे। देन दिस सेम थिंग इट विल कीप प्लेइंग आउट। फिर ये सेम स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, एलिमिनेशन, एडवांटेजेस ट्रेड्स, रिप्रोडक्शन, मैटिंग एंड मीटिंग एक्सेस, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। एंड दिस इज द actual thing that happened, and this is the difference between the Darwinian idea and the Lamarckian idea as of the elongation of neck of giraffe. Now its second point is overproduction of offspring, that organisms they usually produce more offspring that can survive. So even slow breeding species like elephant produce more young that can possibly reach maturity. So उसका reason ये है कि the nature it has bountifully provided for high fertility, क्योंकि सेम द रिसोर्स क्रंच या द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो उसकी वजह से
इट इज़ नॉट श्योर कि उनमें से कितने बच्चे जो हैं या कितने किड्स या कितने ऑफस्प्रिंग हैं दे विल सर्वाइव टू द मेच्योरिटी. सो इसके लिए हायर फर्टिलिटी इट इंश्योर्स दैट आउट ऑफ 5 or 6 ऑफस्प्रिंग इवन 2 कैन सर्वाइव. और यही चीज़ जो है, आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इवन यू मे अप्लाई फॉर यूपीएससी, तो यहाँ पे आपको जो डेमोग्राफिक थियरी है उसमें ये चीज़ समझ में आएगी दैट पहले जो जो अग्रेरियन सोसाइटीज़ होती है या पुअर सोसाइटीज़ होती है वहाँ पर, या फिर जो लो इनकम सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे पीपल दे यूजुअली गो फॉर higher number of offspring, higher number of offspring. क्योंकि सेम थिंग, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट हाई रखने का रीज़न ये है कि डेथ रेट भी हाई होती है. उनमें से कितने ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेंगे उनको भी नहीं पता. सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड a mathematical scenario by which they go for higher number of offspring. और फिर बहुत सारे they could not make it to their maturity, लेकिन उनमें से 6-7 में से एक दो भी अगर survive to the maturity, then उनकी जो lineage है it proceeds on through time. और फिर इसी ओवर प्रोडक्शन, इसी प्रैक्टिकल चीज़ में there is a hint for computation of resources. क्योंकि अगर ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे देन दे आर मैनी माउथ्स टू फीड. जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका भी एक एक कारण यही है हाई पॉपुलेशन का. बिकॉज ब्रिटिश के आने के टाइम के पहले जो इंडियन सिचुएशन जो थी इट वाज सिमिलर टू द मिडीवल यूरोप, मिडीवल फ्यूडल यूरोप, कि एजुकेशन है नहीं, जो मेडिसिन, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ हैं, दे आर नॉट अवेलेबल, बेसिक अमेनिटीज़ नॉट अवेलेबल. तो डेथ रेट जो है वो बहुत हाई है. एंड हाई डेथ रेट की वजह से द पेरेंट्स दे यूजुअली गो फॉर हाई बर्थ रेट, ताकि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनमें से कुछ सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, तो उनका वंश आगे बढ़ जाएगा. बट जैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, the government by its planning process it went for infrastructure development, और उसके साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं स्पेशली रिगार्डिंग बेसिक ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो सब दे केम इनटू द लैंडस्केप. और धीरे धीरे ये जो डेथ रेट है इट वाज ब्रॉट डाउन. अब डेथ रेट तो रिड्यूस हो गई बट स्टिल बर्थ रेट वाज हाई. सो उसकी वजह से इन दोनों में जो डिफरेंस है, पहले ये मान लीजिए कि जैसे 7-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनमें से 6 बच्चे दे कुड नॉट मेक इट टू द मैच्योरिटी. सो अल्टीमेटली जो जो चाइल्ड रेट है, जो बर्थ रेट है, इट वाज अराउंड 1 to 2. बट अगर ये डेथ रेट रिड्यूस हो गई, इट वाज ब्रॉट डाउन टू 1 to 2. बट जो बर्थ रेट है, द फर्टिलिटी है, इट वाज स्टिल हाई. तो उसका जो डिफरेंस है, एवरी कपल हैड अराउंड 5 to 6 चिल्ड्रन. तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो बीच का जो टाइम था, स्पेशली अराउंड 1960s, 70s एंड 80s, उस टाइम पे जब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आ गई बट बर्थ रेट है वो रिड्यूस हुई नहीं. सो जो आज पॉपुलेशन जो देख रहे हैं, जो बेस देख रहे हैं, जिसके वजह से एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन बहुत हाई हो गई, अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है या जो रिप्लेसमेंट लेवल है, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं 2.1. और बहुत सारे स्टेट जो हैं वो इससे भी कम पे हैं, 2.0 या 1.9 पे है. यानी पीपल आर नाउ गोइंग फॉर लेस चिल्ड्रन, 1 or 2. बट स्टिल जो बेस है वो इतना हाई हो चुका था उस टाइम तक, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है. फिर इसमें वो एक सन प्रेफरेंस दैट इज़ टिपिकल फॉर एशियन सोसाइटी, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हुई. कि जब समझ में आ गया लोगों को कि जो जो डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, तो जो हाई बर्थ रेट है उसको भी कम कर लेना चाहिए. बट स्टिल सन प्रेफरेंस की वजह से दे केप्ट गोइंग ऑन फॉर
new offspring. खैर, now ये तो आपको समझ में आ गया. Over production of offspring, it leads to competition for resources. Then his third observation was for struggle for existence, that in the wild life is hard and individual must compete for food, avoid predators, withstand disease and find mates. So only those that are best adapted to their environment, they are likely to survive and reproduce. So this struggle for existence, it is an eternal struggle everywhere. Even if the wild is not there, even if we, the Homo sapiens, are living in a concrete jungle, the place has changed, but the rules are the same. It is still the jungle, and we still have to compete for everything, for food, to avoid predators, to withstand the onslaught of time, the cruelty of time, and to find mates, and to see to take forward our lineages. So here the the differential principle comes into picture, that those with the advantageous traits, they will secure for themselves everything that is here, and these advantageous traits, they will be selected by nature. Then comes the survival of the fittest. So even if this phrase was popularized by Herbert Spencer, it captures the essence of natural selection. And fitness here doesn't necessarily mean physical strength or endurance or speed or such quality. It means reproductive success. It means the fittest are those whose traits best suit them to environment, and they reproductively are fit enough to pass on their genes. So example is given here. A camouflage insect that avoid predator is fitter than a brightly colored one, even if it is slower. So here, a camouflage insect who avoid being eaten. So first it is not eaten, and then it mates, it reproduces, and it passes on its genes. So this characteristic or this process, it is known as reproductive success, and that's what survival of the fittest means in evolution. And finally, gradual evolution. So here Darwin proposed that evolution occurs gradually over a long period of time. It is a very slow process, and he rejected sudden or dramatic changes, which he called saltation, in favor of slow continuous transformation. बट लेटर जो आगे हम देखेंगे पंक्चुएटेड में या क्लेटोजेनेसिस में कि evolution has different kind of ways. Now the evidence Darwin used to support his theory: first the fossil records, the fossil record that he found in South America, which showed that life had changed over time. Then the second evidence he suggested was that species in the same geographical area, that tend to resemble each other even if they live in different environment. And most of these studies were done in Galapagos Island in South America, in Madagascar. Then he suggested comparative anatomy and homologous structure, like the forelimbs of humans, whales, and bats. Homologous means those structure that look similar and function similar. So, like human, whales, and bats, all of us, we have four limbs, जो आगे के जो हाथ हैं. So इन तीनों के अंदर ये structures हैं, these are homologous. So उससे इस he drawn a comparison and suggested a common ancestry. So Darwin के according, all these homologous structure, they suggest that the species that derive these homologous structure, they belong to a common ancestor. Now embryology, which is that similarity in early development of different animals, hinted at shared evolutionary origins. इसका मतलब है, when you look at the prenatal pictures of different animals, या जो prenatal structure of different animals, especially in their wombs, so वो similar हैं. अगर आप यही जो fetus देखेंगे, most of the mammals, सारे mammals, काफ़ी सारों का जो fetus है, it look exactly the similar.
ह्यूमन का, डॉग का, बहुत सारे जो कैटल स्पीशीज सबका जो जितने भी एम्ब्रियोनिक जो हैं, यानी जो वूम्स के अंदर ग्रो होते हैं, उन सब के फीटसेस दे लुक सिमिलर। और फिर उसके बाद में जो अर्ली डेवलपमेंट स्टेज है, द नेटल स्टेज, जब पैदा होने के बाद हाउ दे ग्रो अप, वो सब उन सब जितने भी फीचर्स हैं प्री नेटल एंड नेटल, उन सबको देख के भी, उनकी सिमिलैरिटी को देख के भी वी कैन अराइव एट अ शेयर्ड इवोल्यूशनरी ओरिजिन, कि अल्टीमेटली ये जो जितने भी स्पीशीज हैं that have similar natal and prenatal environment, they might have belonged to an evolutionary common ancestor somewhere in the deep past. And finally, artificial selection. So Darwin compared natural selection to selective breeding done by humans. So humans भी जो हैं artificial selection करते ही हैं, especially regarding breeding of cattle and plant species. So here Darwin, he suggested that if humans can produce dramatic changes in pigeons or dogs over a few generations, why can't nature do the same over millions of years? Now let's talk about limitations of Darwinism. So even though his ideas were revolutionary, they had important gaps. First, he did not uh, he did not propose how these traits pass from parents to offspring. And he proposed a speculative idea called pangenesis, but it was incorrect. और later जो ग्रेगर मेंडल ने जब जीन जो फैक्टर सजेस्ट किए, उसके बाद ये जो तस्वीर जो है it became clear. Now the second gap is about source of variation. That Darwin observed variation, but he could not explain how these new variations arose. And as of rate of evolution, he suggested that the natural selection and evolution, it is a gradual process, but then the, the evolution, it can be rapid. So this rate of evolution, this uh, pace of evolution, he was wrong on it. Now examples of Darwinism in action. First, Darwin's finches, which he collected from Galapagos Island, and noticed that the birds' beak shape they varied according to their diets. Finches that ate hard seeds that had strong and thick beaks, and those ate insect had slender and pointed beaks. So this observation became a classic example of adaptive radiation. Now the second example is suggested industrial melanism in moths. So in industrial England, dark dark colored peppered moths they became more common because they were better camouflaged against soot darkened trees. जैसे एक एग्जाम्पल को बता देता हूँ मैं, जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 17th सेंचुरी, सो जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंग्लैंड में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली अराउंड मैनचेस्टर एंड लंदन, उन सब में बिल्डिंग्स जो हैं दे वर कवर्ड विद सूट, जो फैक्ट्री से जो कार्बन निकलता है ब्लैक कलर. सो अब 17th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो इंग्लैंड में जो मॉथ स्पीशीज थी दे वर ऑफ सिल्वर कलर और लाइट कलर. लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इन्हीं स्पीशीज में धीरे धीरे जो ये लाइट कलर मॉथ स्पीशीज हैं दे बिकम ड्विंडल, ये दे reduce in number, और उनकी जगह पे जो डार्क कलर्ड मॉथ्स हैं दे बिकेम मोर कॉमन. क्योंकि ये डार्क कलर्ड जो मॉथ्स हैं they were better camouflaged, they were better protected against dark colored trees or dark colored buildings, so because of which they had an edge over silver color or lighter color moths. So this example again exemplify how natural selection works in action. Now, impact of Darwinism on anthropology. So Darwin's theory revolutionized anthropology by saying humans were no longer seen as separate from nature, and it became scientifically valid to study human fossils like Australopithecus and Homo erectus. उससे पहले जब जो लमाकिन वीडियो में आपको कहा था कि the old society it was highly religious and they could not believe in anything but God. And उनके हिसाब से evolution is a fake thing. Evolution cannot happen, and
All the species, they were fixed as suggested by God. Then the comparative anatomy and primate study, they gain importance in understanding human evolution, and all of these ideas were thanks to Lamarckian and Darwinism idea in anthropology. So this is it. In the next video, we are going to proceed with Neo-Darwinism. Again, thank you very much and kindly subscribe the channel.